Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, Changing World, and today I will deliver its first lecture. We have already done the introduction of this unit. Today I will start the first lecture. So my dear students, let's start it with an activity. So difference in the past and present lifestyles. So you can see कि कैसे जो है वो communication के जो तरीके हैं वो change होते जा रहे हैं. पुराने ज़माने में आप देखते थे कि लैंडलाइन फ़ोन्स जो हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते थे. Then after that इनको कोशिश किया गया कि इनको वायरलेस बना के मोबाइल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए. एंड यू कैन सी कि जर्नी जो है वो चेंज होता जा रहा है विद द टाइम. टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो इन्हांस होती जा रही हैं, वो चेंज होती जा रही हैं. इसीलिए हम कह रहे हैं वर्ल्ड इज चेंजिंग विद द टेक्नोलॉजी विद द टाइम. सो अगेन डिफरेंस इन पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम्स. इन द ओल्ड टाइम्स पीपल वो यूज टू राइट लेटर्स. अभी भी हम लेटर्स लिखते हैं, पोस्ट ऑफिस भी हैं, उनको पोस्ट भी किया जाता है. लेकिन पहले ज़माने में हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन होता था कि वी जस्ट यूज टू राइट द लेटर्स देन पोस्ट इट, और आफ्टर अ फ्यू डेज वो जो है वो मिलता था रिसीवर को. लेकिन आजकल यू कैन जस्ट टाइप एन ईमेल एंड विद इन सेकेंड्स द रिसीवर कैन गेट इट एंड रीड इट. एंड वी कैन यूज मोबाइल फोन्स. इससे भी आप ईमेल कर सकते हैं. यू कैन कॉल एंड यू कैन कनेक्ट टू द वर्ल्ड आउट देयर. एंड इट इज़ जस्ट ऑन द पाम ऑफ योर हैंड. आपके हाथ के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन है अब आजकल. सो अब आपको लंबे लंबे ख़त नहीं लिखने, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में. सो दीज आर द थिंग्स विच आर चेंजिंग विद टाइम. अगेन डिफरेंस इन पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम में एक चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन. पहले ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन या तो ऑन फुट होती थी, एनिमल्स पे होती थी, देन बाईसाइकिल्स आ गई, फिर गाड़ियाँ आनी शुरू हुई, व्हीकल्स आने शुरू हुए, बड़े व्हीकल्स आने शुरू हुए. एंड विद टाइम यू कैन सी फ्रॉम एनिमल्स टू कार्स टू बाईसाइकिल्स, ट्रेन्स एंड ट्राम्स, देन अर्ली कार्स, एंड नाउ द मॉडर्न एंड फास्ट कार्स विच आर एक्सट्रीमली फास्ट. टाइम कम लगता है, लग्जरी ज़्यादा है, कंफर्टेबल ज़्यादा है. सो दिस इज हाउ कि यू कैन टेल कि कैसे जो है वो वक्त चेंज हो रहा है. फ्रॉम पास्ट से प्रेजेंट में जो है वो चीज़ें भी वक्त के साथ साथ बदलती जा रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ होती जा रही है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर भी इसी बारे में है. सो टुडे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकग्नाइज दैट प्रेजेंट टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम पास्ट इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टाइल, फूड, कम्युनिकेशन एंड क्लोथ्स. सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ बदलती जा रही हैं. वी विल स्टडी दैट टुडे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर दैट लेट्स क्विकली लुक एट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. सो अल्लाह सेज इन कुरान, ओ बिलीवर्स, fasting is prescribed for you as it was prescribed for the people before you so that you may become pious. So my dear students, क्योंकि हम दुनिया के बदलने की बात कर रहे हैं, वक्त के साथ चीज़ों के बदलने की बात कर रहे हैं, but our religion Islam remains the same. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखने का हुक्म दिया है. अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने. और हमसे पहले लोग जो थे पास्ट में, आपके दादा, आपकी दादी, उनके दादा दादी या उनके पेरेंट्स, दे वर ऑल यूज्ड टू फास्ट. और हम आज भी फास्ट करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं रमज़ान के महीने में. सो द रिलीजन रिमेन्स द सेम. इट डज नॉट चेंज विद द टेक्नोलॉजी एंड विद द टाइम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सम प्री रीडिंग क्वेश्चंस. हाउ डू यू कॉन्टैक्ट और टॉक टू योर रिलेटिव्स who lives in far flung areas? जो लोग आपसे बहुत दूर रहते हैं, आप उनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं? With the help of video calls, telephones, emails, we can connect to them or we can communicate. Now, do the facilities you enjoy were there in your parents' childhood? Very important question. इससे आपको पता चलेगा कि कैसे वक्त जो है वो बदल रहा है. क्विकली थिंक, या आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, आप अपनी टीचर्स से पूछ सकते हैं. दे आर ओल्डर देन यू. इवन आई कैन टेल यू कि जो चीज़ें अब आप लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं अपने व्हेन आई वाज अ किड आई डिडंट यूज देम. जैसे कि मोबाइल फोन्स, देयर वर नो मोबाइल फोन्स व्हेन आई वाज अ किड. व्हेन आई वाज अ वेरी लिटिल किड मोबाइल फोन्स नहीं थे. व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप आई वाज इन आई गेस 6 or 7, तब मेरे घर में पहला मोबाइल फोन आया था. आई रिमेंबर दैट. देयर वर नो बिग LCDs एट दैट टाइम व्हेन आई वाज अ किड. When I was in grade 8th, I guess in 8th or 9th, तब मेरे घर में पहली दफ़ा LCD आई थी और तब मैंने LCD देखी थी. So the things are changing with the time. Even I haven't seen those things which you are using right now.
चीज़ें उस तरीके से एडवांस नहीं थी when I was a kid. So it's a blessing for you कि कैसे आप लोग चीज़ों को टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं आजकल. So my dear students, I request you all to please open page number 47 in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's start the lecture. Put your fingers where I will read. Past and present. Did your parents use a computer or mobile phone at the times that you do use today? Of course not. Past time was far different from present. In past, people could not communicate and move from one place to another. That much easier. Life was difficult as there was no technology at that time. People used to communicate with each other through letters. So my dear students, पुराने ज़माने में या हमारे पेरेंट्स के टाइम पे चीज़ें इतनी ईजी नहीं थी या वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी जो हम आज यूज़ कर रहे हैं. They were not able to use computers or mobiles or watch TV on so many channels. आपके पास कितने channels हैं आजकल जो आप TV पे देखते हैं. So the things were different in past. Ships were used to travel between the countries having an ocean in between. The system of transportation was time consuming. So my dear students, older times में transportation जो system है वो भी बहुत slow होता था. बहुत दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में. Now आप यहाँ से एक दूसरे continent चले जाते हैं और आपको minimum 24 hours लगते हैं. For example, my brother lives in Australia and it took him only 21 hours to travel from Pakistan to Australia. और बीच में उनका layover भी होता है और सब कुछ होता है and still it takes so much less time. अगर आप on road लाहौर से कराची ट्रैवल करें या इस्लामाबाद से कराची ट्रैवल करें तो it takes almost 24 hours और 18 hours minimum. लेकिन अगर आप by air जाएं एरोप्लेन पे ट्रैवल करें तो मिनिमम 1 hour से 30 minutes लगते हैं. सो सी कि टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें जो है वो कितनी ज़्यादा मॉडर्न और फास्ट होती जा रही हैं. So my dear students, the world has changed with time. At present, life is much easier than in the past. People use mobile phones, laptops and internet to communicate. They can easily contact with the people living in any corner of the world. They can travel by aeroplanes in a short time. That is how the world has changed with time. So my dear students, टाइम के साथ साथ कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गई है. पहले बहुत स्लो होती थी, अब बहुत फास्ट हो गई है. सो टेक्नोलॉजी एंड टाइम हैज़ चेंज्ड द थिंग्स अ लॉट. नेक्स्ट, in the same way, people were used to eat healthy foods like vegetables, fruits, meat, etc. Nowadays, people like to eat junk food such as burgers, pizzas, patties, etc. So my dear friends, older times में लोग जो है वो healthy food को ज़्यादा फोकस करते थे. There were no restaurants, इतने ज़्यादा नहीं होते थे. आजकल बच्चे बड़े हर कोई जो है वो जंक फूड को ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी पे लगता है, which is not very healthy. लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ईट आउट्स बन चुके हैं, रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, सो पीपल लोगों का खाने पीने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट हो गया है. In the past time, people in hot summer days used to wear light clothes. They stayed in their houses during noon time. However, now air conditioners are used in homes, offices, shopping malls. In the past, the houses were simple and made of mud. These days, houses are made of bricks and cement. All these changes in our lifestyle occurred from time to time and modernized our way of living. So, my dear students, पुराने ज़माने में लोग हल्के कपड़े पहनते थे, मिट्टी के घरों में रहते थे, हाथ का पंखा इस्तेमाल करते थे. आजकल जो है वो हर जगह एयर कंडीशनर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, एयर कूलर्स लगे हुए हैं. इसके अलावा मॉडर्न घर बन चुके हैं जिनकी छतें जो हैं वो बहुत मॉडर्न होती हैं और इस तरीके से ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो गई है आजकल in comparison to the older times. So my dear students, these are the difference between past and present time and how the world has changed from time to time. Now for the practice, you will move forward towards page number 53 and you will compare these two pictures. So explain the pictures orally. आपको इनको orally explain करना है. One picture you can see it is black and white. The roads are not paved. They are made from mud, and on the other side you can see the paved roads. So transportation is much more easier on this road, which is
properly paved. यहाँ पे easily आप move कर सकते हैं, जल्दी move कर सकते हैं. So in present times the roads are much more paved and modernized than in the older times. Next is you can download this worksheet from the description box below this video. Write down your name and your class and choose a modern mode of transport. Draw the 3 pictures to illustrate how that mode of transport has changed over time. So my dear students, past, then near past and then present. आपको एक पिक्चर लेनी है, एक कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना है, कोई भी ले लें आप साइकिल भी ले सकते हैं, आप एरोप्लेन ले सकते हैं, पुराने ज़माने में कैसा था अब कैसा हो गया है, गाड़ी ले सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कैसे इट हैज़ चेंज विद द टाइम. सो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स and you have to color them. Pause the video and complete the worksheet. I hope you have done it. Now we will move forward towards an independent activity. So make a comparison chart about communication and transportation system of past and present time. Then write down the inventions that change our lives both positively and negatively. Present your comparison chart in class. So my dear students, अब हमने communication और transportation कैसे change हो गई है past और present time में, उसका आप एक chart बनाएंगे. Just like this, first have a look at the communication. Past में people were used to write letters. Nowadays people use laptops. In the past people used phone sets like this which were not very clear, आवाज नहीं आती थी इनमें से. Nowadays people use mobiles which they can carry everywhere. In old times people used to connect to the world with the help of radios. Now there are modern LCDs which connect you throughout the world. So these are the difference between the communications. अब इनके positive और negative effects क्या हैं? So computers और mobiles का positive effect ये है कि ये आपको time आपका save करते हैं, आपको पूरी दुनिया से connect करते हैं, लेकिन इनके negative effects भी हैं. इनके negative effects ये हैं कि आप लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और इनके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं इनको ज़्यादा देर तक यूज़ करने के. सो माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ओवर टाइम. अब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कैसे चेंज आ गया, लेट्स हैव अ लुक. पीपल यूज टू वॉक और यूज एनिमल्स, देन शिप्स, देन ट्रेन्स, देन बाईसाइकिल, देन अ मॉडर्न कार, एंड देन नाउ aeroplanes have developed. So these transportation systems positively what they have changed the positive way, they save our time. ठीक है, जो फासले हैं वो सिमट गए हैं, miles have become shorter क्योंकि आप लोग बहुत थोड़े टाइम में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं because of the modern vehicles and transportation system. So my dear students, you can present this chart in your class also. So now is the time for evaluation. For evaluation, I will ask questions from listening and speaking. So how was life in the past? It was difficult and slow. Compare the communication system of past with the present. There were no mobile phones. People used to write letters, and now people can just email anything and you can receive it within seconds. So how do people travel to far-flung areas in present days? On modern cars, buses and aeroplanes. So how have food and clothing changed over time? In older times, people in hotter days used to wear lighter clothes. Nowadays, people can wear any kinds of clothes because there are air conditioners और आपको गर्मी नहीं लगती. और food, in the older times, people used to eat healthy foods, and nowadays people prefer junk food. So what did people do in summer to keep themselves cool in the past and present time? In the older times, people used to wear lighter clothes and they used to live in mud houses. They used to have hand fans. Now people use air conditioners to keep themselves cool. So my dear students, for homework, you will do question number 1 from exercise F, page number 54. You will do this question in your notebooks. How did people used to illuminate their houses before electricity? पुराने ज़माने में बिजली के लिए घरों को रोशन करने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? Candles or lanterns. Very good. So my dear students, for wrap up, today we have learnt that in the past time communication system was slow and time consuming, while today communication is one click away. In the past, people used to travel through ships, bull carts and tongas. In modern world, people traveling is easy because of aeroplanes, buses and cars. People were used to eat healthy food. Nowadays, we were
we eat foods like burgers, pizzas, etc. that are comparatively unhealthy. So, my dear students, this was it, the comparison between past and present and how the things and the world is changing with time. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.